That was about meristematic tissues and their classification, and then we discussed about the organization of apical meristems. So organization of apical meristems में मैंने आपको theories बताई. सबसे पहले apical cell theory, उसके बाद मैंने आपको बताई histogen theory, उसके बाद मैंने आपको बताई tunica corpus theory, and then we discussed at last quiescent center theory, isn't it? अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे अबाउट परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज, तो पहले जब मैंने बात की थी आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू जो नागेली ने डिफरेंस क्लासिफिकेशन दी थी, तो तब मैंने आपको बताया था परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं बच्चे, दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन बिकॉज दे हैव अंडरगॉन व्हाट, डिफरेंशिएशन. So definition अगर define करें permanent tissues, these are tissues derived from meristematic tissues. बनते कहां से हैं? meristematic tissues से बनते हैं. Very good. These are tissues derived from meristematic tissues, but have lost capacity of division. So इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है. शाबाश. अब यहां पे याद रखना है बच्चे, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, इनके दो टाइप्स हैं. एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू. दूसरा क्या होता है बच्चे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कितने टाइप्स होते हैं परमानेंट टिश्यू के? दो. सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब डिफरेंस जरा यहीं पे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है. सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, इट इज मेड ऑफ ओनली वन type of cell. वो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसमें सिर्फ एक ही तरीके की सेल होती है. ठीक है ना बच्चे? शाबाश. जैसे यहां पे मैं बना रहा हूं, दिस इज सिंपल परमानेंट टिश्यू. फॉर एग्जांपल, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स. ठीक है ना? बट देयर शेप इज सिमिलर. So this type of permanent tissue is simple permanent tissue. Another one is, there is a group of cells, but there are different shapes of cells, isn't it so? So this type of tissue is called as complex permanent tissue. So can I say here, it is made of more than one type of cell. Made of more than one type of cell. You get my point? Very good. So यहाँ पे आपने याद रखा अभी तक बच्चे, permanent tissues are those tissues which are derived from meristematic tissues, but they have lost the capacity of division. Permanent tissues are divisible into two categories: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is made of only one type of cell. Complex permanent tissue is made of more than one type of cell. ठीक? Let me give you an example of simple permanent tissue. This is simple permanent tissue. Simple PT, and here it is complex PT. Complex permanent tissue. Simple permanent tissue example.
Very good. Parenchyma. Number 2, collenchyma. And number 3, sclerenchyma. So these 3, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, they are examples of what? Simple permanent tissues. Then we have complex permanent tissue. Complex permanent tissue की example अगर मैं दूं बच्चे, there is one xylem and another one is phloem. ठीक है ना? शाबाश. We have to study them one by one. सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे? We will discuss about number first, parenchyma. Very good. So parenchyma के बारे में अगर बात करेंगे, living permanent tissue. What is it? Living permanent tissue characterized by. अब यहां जरा मैं आपको दिखाऊं बच्चे, जो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा की सेल्स जो होती है, इनके फीचर्स क्या है? एक फीचर होता है बच्चे इनमें, सेल्स और लिविंग. दूसरा फीचर पैरेन्काइमा सेल्स का क्या होता है बच्चे? सेल्स और थिन वॉल्ड. और आपको याद है पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो थिन वॉल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल. क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल. वेरी गुड. तीसरा फीचर क्या है पैरेन्काइमा का? सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज. सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज. वेरी गुड. एक और फीचर क्या है? There is another feature of parenchyma, that is cells are flexible. अब चूंकि प्राइमरी सेल वॉल थिन सेल वॉल होता है तो रिजिडिटी इनमें ज्यादा नहीं होती, इसलिए सेल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. शाबाश. एक और फीचर है, सेल्स और हाईली वेरिएबल इन शेप. पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं, ये कोई एक शेप इनमें नहीं पाई जाती. ठीक है ना? कोई पैरेन्काइमा होती है वो आइसोडायमीट्रिकल है, ठीक है, कोई है वो पॉलीगनल है, कोई इलोंगेटेड है. ठीक है ना? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर. ठीक है ना? So I have wrote it like this, iso, isn't it? I stands for isodiametrical. So they can be isodiametrical, isn't it? They can be spherical. They can be oval. They can be polygonal. They can be elongated. Isn't it? That means cells are highly variable in shape. They can be isodiametrical, they can be spherical, oval, polygonal or elongated. एक और फीचर क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू. ऑरिजिन के हिसाब से परमानेंट टिश्यूज में सबसे ओल्डेस्ट टिश्यू कौन है? पैरेन्काइमा है. forms most of the plant body. आपको याद है
जब मैंने आपको बताया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या जिसमें कॉर्टेक्स आता है, पेरिसाइकल आता है, पिथ आता है, मैंने तब आपको बताया था इसको हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि प्लांट का मेजर पार्ट यही बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यूज आर मोस्टली मेड ऑफ पैरेन्काइमा, इसीलिए मैंने यहां लिखा फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। गेट माय पॉइंट? वेरी गुड। I'm coming back here. यहां पे टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? पहला टाइप यहां मैं बताऊंगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरेज पैरेन्काइमा। व्हाट इज दैट टाइप ऑफ पैरेन्काइमा नोन एज स्टोरेज पैरेन्काइमा? क्या होता है स्टोरेज पैरेन्काइमा? एज द नेम इंडिकेट्स, स्टोर्स फूड और वाटर। क्या स्टोर करता है बच्चे? ये स्टोर करता है या फूड या वाटर स्टोर करता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं, सकुलेंट्स, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, दोज आर सकुलेंट्स। उनको वाटर स्टोर करने की जरूरत होती है ना? तो उनमें वाटर कौन स्टोर करता है? स्टोरेज पैरेन्काइमा। कौन करता है बच्चे? सेकंड, दूसरा, व्हाट इज दैट? That is known as parenchyma. Parenchyma. What is parenchyma? As the name indicates, aren means air. Parenchyma which store air. Parenchyma which store air. What is that type of parenchyma known as parenchyma? And you know बच्चों, you know my dear students, parenchyma कहाँ पे पाया जाता है? They are mostly found in hydrophytes. Hydrophytes. That is aquatic plants, isn't it? Then we have third one. What is that? That is called as assimilatory parenchyma. Assimilatory parenchyma, which is sometimes known as chloronchyma. Assimilatory parenchyma, also known as chloronchyma, sometimes we call it photosynthetic parenchyma. You get my point? अब जैसा नाम वैसा काम। आप बोलोगे कैसे सर? अब जरा देखिए यहाँ पे क्लोरेन्काइमा, इसको हम एक और नाम बोलते हैं photosynthetic parenchyma. Such parenchymas consist of chloroplasts. When there are chloroplasts, that means such parenchyma may be then involved in photosynthesis. So such parenchyma contain chloroplasts. Such parenchyma contain chloroplasts and carry out photosynthesis. क्या करते हैं बच्चे? फोटोसिंथेसिस करते हैं। गुड। आप प्लांट में कहाँ होगा? What do you think? Assimilatory parenchyma प्लांट में कहाँ पाया जाएगा? Good. Present in leaves.
और आपको पता है बच्चे, लीव्स में जो एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा होता है उसको हम क्या नाम बोलते हैं? लीफ मीजोफिल। क्या नाम बोलते हैं? लीफ मीजोफिल। Fourth type of parenchyma. What is that known as? That is known as prosenchyma. क्या नाम बोलते हैं उसका बच्चे? That is called as prosenchyma. अब यहां जरा देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है यहां पे. Prosenchyma consists of elongated parenchyma with tapering ends. Tapering ends means pointed ends. अब यहां जरा देखिए आप, ये देखिए, और स्लाइटली थिक वॉल्ड होते हैं, स्लाइटली. नॉर्मली तो रूल तो ये है कि इनका वॉल क्या होना चाहिए? थिन होना चाहिए. लेकिन प्रोसेंकाइमा इज एन एक्सेप्शन. प्रोसेंकाइमा कंसिस्ट ऑफ elongated parenchyma with tapering ends and cell wall is slightly thick. और हमेशा याद रखना बच्चे, जिन सेल्स का सेल वॉल थिक होता है दे आर इन्वॉल्वड इन सपोर्ट. दैट मीन्स प्रोसेंकाइमा जहां भी पाया जाएगा वहां पे इसका काम क्या होगा? सपोर्ट. Isn't it? So can we say here प्रोसेंकाइमा consists of elongated parenchyma. Elongated parenchyma with tapering ends. What do you mean by tapering ends? Yes, pointed ends. Intercellular space कहीं दिख रही है? नहीं. So intercellular spaces are absent. Intercellular spaces are absent. Good. Function क्या होगी? Yes, provide support. और हमेशा याद रखना my dear students, प्रोसेंकाइमा कहां पे प्रेजेंट होता है? Present in pericycle of root. मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, इन दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स में जो पेरिसाइकिल होता है वो किसका बना होता है? प्रोसेंकाइमा का बना होता है. यू गेट माई पॉइंट? वेरी गुड. सो अगेन I discussed about permanent tissue. What is a permanent tissue now? Permanent tissues are those tissues which are derived from meristematic tissues, but the cells of permanent tissues have lost the capacity of diffusion. Good. How many types of permanent tissues are there? Two. What is number one? That is simple permanent tissue. What is number two? Complex permanent tissue. Simple permanent tissue consists of cells of only single type, only one type of cell. Complex permanent tissue consists of more than one type of cell. Simple permanent tissue की एग्जांपल दे दो बच्चे, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सिक्लेरेन्काइमा. वेरी गुड. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की एग्जांपल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. देन आई टुक अप फर्स्ट पैरेन्काइमा. मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा consists of living cells which are characterized by a number of features I discussed with you. Number one, पहला फीचर जो डिस्कस किया, cells are very good with a cell wall which is thin, primary cell wall. वो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है. क्या पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं? यस, लिविंग होते हैं. गुड. इनकी शेप क्या हो सकती है? वेरिएबल हो सकती है. जैसे आइसोडायमीट्रिकल होंगे, स्फेरिकल होंगे, ओवल होंगे, पॉलीगोनल होंगे या इलोंगेटेड होंगे. Isn't it? क्या ओरिजिन के हिसाब से सबसे प्रिमिटिव टिश्यू कौन है? पैरेन्काइमा. एंड प्लांट का मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम
व्हाट, पैरेन्काइमा। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा हमने डिस्कस किए। पहला कौन सा था, स्टोरेज पैरेन्काइमा। As the name indicates, storage parenchyma stores food or water. Example in succulents. Succulents are present in these are xerophytic plants. Xerophytic plants. Very good. Then arenchyma. Arenchyma or parenchyma which store what? Air. They are present via hydrophytes. Then we have assimilatory parenchyma. Assimilatory parenchyma का क्या नाम बोला मैंने, वो क्लोरेन्काइमा या फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा। और मैंने आपको बताया ये पैरेन्काइमा जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस। कहां पे होते हैं एसिमिलेटरी पैरेन्काइमा, दे आर प्रेजेंट इन लीव्स, लीफ मेसोफिल जैसे, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा कहां पे पाया जाता है, पेरिसाइकल ऑफ रूट्स। और प्रोजेन्काइमा का फीचर क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ elongated parenchyma with tapering ends. Intercellular spaces are absent and it provides what, support. Only parenchyma which provides support, that is prosenchyma. See here, last type, that is called as idioblasts. इडियोब्लास्ट्स कौन से पैरेन्काइमा होते हैं, इडियोब्लास्ट्स जो आई मीन टू से कुछ स्टोरेज प्रोडक्ट्स जैसे ना वेस्ट मटेरियल्स, आई मीन टू से लाइक गम्स आर देयर, रेजिन्स, टैनिन्स, ये स्टोर जो करेंगे पैरेन्काइमा ना, उनको हम क्या बोलेंगे, इडियोब्लास्ट्स। सो स्टोर waste products of the plant. Always remember, these waste products are also known as ergastic substances. What are these known as? Ergastic substances, such as, yes, gums, such as resins, such as tannins. वो पैरेन्काइमा जो गम्स, रेजिन्स या टेनिन्स या इन जैसी कुछ एर्गेस्टिक सबस्टेंसेस को स्टोर करते हैं, उनको हम बोलते हैं इडियोब्लास्ट्स। यू गेट माय पॉइंट? वेरी गुड। दैट वाज अबाउट पैरेन्काइमा। Let's move towards another topic, another aspect of simple permanent tissues. What is that? Very good. That is collonchyma. Okay, dear students, here I am writing it down. Collonchyma. So we can discuss it in points. Point number 1, very good. Living mechanical tissue. See here, what is collonchyma? Collonchyma is a living mechanical tissue. Mechanical means it provides support. Living means, okay, it is not dead. Very good. That will be discussed later on. अब जरा देखिए दूसरा, collonchyma के बारे में बहुत अहम पॉइंट पहले आपको बताया. It is a living mechanical tissue. Shape can be variable. Shape is variable. जैसे they can be spherical. They can be polygonal. They can be oval.
So their shape can also be is also variable, but not as variable as that of parenchyma. Okay, so shape is variable. Second, and point number third, cell wall is slightly thick. And always remember, cell wall is made of. अब पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में इनका सेल वॉल जो होता है वो थिक होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है बच्चे सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस and pectin, another carbohydrate. What is that known as? Pectin. So तीन चीजें यहां पे पाई जाती हैं. वहां तो सिर्फ सेल्यूलोस था पैरेन्काइमा में. सेल वॉल, जो पैरेन्काइमा का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोस का. लेकिन जो कोलनकाइमा होता है इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोस और हेमीसेल्यूलोस और पेक्टिन. You get my point? Another important point, intercellular spaces are generally absent. Generally, कोलनकाइमा में जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं पाई जाती, ठीक है ना, जनरली, बट एक्सेप्शन है. एक्सेप्शंस आर, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, इजंट इट? सो एक्सेप्शन कौन है? लेक्यूनर कोलनकाइमा. Lacunar coloncyma, it is an example where intercellular spaces are present. Otherwise, generally intercellular spaces are absent. किन में? कोलनकाइमा में. ठीक है बच्चे? शाबाश. Then, अगर आपको कल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कोलनकाइमा, the cells of coloncyma are thick due to deposition of what? Very good. Due to deposition of pectin. See here, thickenings are generally present on. Thickenings are generally present on corners. और हमेशा याद रखना, कॉर्नर्स या एंगल्स पे जो थिकनिंग होती है ना, किसकी होती है? सेल्यूलोस प्लस हेमीसेल्यूलोस. जैसे मैं आपको यहां एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल, दिस इज कोलनकाइमा, polygonal coloncyma here. This is coloncyma, and you know these are the angles, these are the corners of cells. अब यहां पे डिपोजिशन होती है जनरली. कोलनकाइमा में कहां डिपोजिशन जनरली आपको मिलेगी? यस, कॉर्नर्स ऑफ सेल्स पे मिलेगी. और वो डिपोजिशन किसकी होती है? सेल्यूलोस एंड हेमीसेल्यूलोस. Cellulose and hemicellulose. Very good. Another important point is here. Cells of coloncyma. Cells of coloncyma generally contain chloroplasts. वेरी गुड. सो कोलनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनमें जनरली क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं. और जो आपको पता है जहां क्लोरोप्लास्ट्स होंगे वहां क्या होगा? फूड एसिमिलेशन. सच कोलनकाइमा carry out photosynthesis.
You get my point? Very good. So what about colon-chyma say? Colon-chyma is a living mechanical tissue. Very good. Shape is variable. Spherical, polygonal or oval. Good. Cell wall is comparatively thick. In comparison to what? In comparison to parenchyma. Very good. So cell wall is made of cellulose and hemicellulose and pectin. Good. Are intercellular spaces are there or not? Generally they are absent, but exception is what? Lacunar colon-chyma. Very good. Thickenings कहाँ पे deposit हो रही है generally? Thickenings are generally deposited on corners or angles of cells. और वो thickening किसकी होती है? Cellulose की होती है. और किसकी होती है? Hemicellulose की होती है. और बाकी जो thickening होगी ना यहाँ से इन walls पे वो pectin की deposition होती है ना? So this is pectin. Corners पे जो thickening होगी वो cellulose और hemicellulose की होगी. Cells of colon-chyma, they generally contain what? Chloroplasts, isn't it? And you know, when they contain chloroplasts, they will carry out what? They will carry out photosynthesis. Now, see, let us see where this colon-chyma is present in the plant. Present or location. कहां पे प्रेजेंट होता है ये? Number one, it is present in hypodermis of dicot stem. हमेशा याद रखना, remember once for all. जब एपिडर्मिस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा कि एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, दैट आउटर मोस्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस. और ये हाइपोडर्मिस जो डाइकॉट स्टेम्स में होता है, किसका बना होता है? कोलन-chyma का. सेकंड, और कहां पे पाया जाता है ये? इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन petiole of leaves. Petioles of leaves. जो लीव्स के petioles होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, उनमें भी क्या पाया जाता है? colon-chyma. And they are also present in margins of leaves. अब देखिए ना, they provide mechanical support. अब इन लीव्स के मार्जिन्स को कट होने से बचाने के लिए कौन सा टिश्यू है? colon-chyma. That is why we call it a mechanical tissue. You get my point? Very good. So again, let us revise it. So colon-chyma, a few points to remember. This is a living mechanical tissue. The shape of cells in colon-chyma is variable. Cell wall is slightly thick, comparatively thick as compared to parenchyma. Cell wall is made of cellulose, hemicellulose and pectin. Intercellular spaces are generally absent, with the exception of lacunar colon-chyma. Thickenings are generally present on corners, and those thickenings are made of cellulose and hemicellulose. Cells of colon-chyma generally contain what? Chloroplasts, and when they contain chloroplasts, they assimilate food. Where is their location inside the plant? Hypodermis of dicot stem, petioles of leaves, and margins of leaves. If a question is asked to you, students, which is an example of living mechanical tissue inside the plant? That's colon-chyma. Which is an example of storage tissue inside the plant? Parenchyma. You get my point? Let's move towards the last type of simple permanent tissue. Okay, my dear students, we have third type of simple permanent tissue. That type of simple permanent tissue is known as, very good, that is called as sclerenchyma. Sclerenchyma.
You know, the term sclerenchyma was given by Metanius. The term was given by Metanius. Good. Let us see about the features of sclerenchyma. There is feature number 1. Sclerenchyma forms dead mechanical tissue. Dead mechanical tissue. Before this, we discussed collenchyma, which is an example of living mechanical tissue. Sclerenchyma is an example of dead mechanical tissue, and it is main mechanical tissue of plant. Main mechanical tissue of plant. प्लांट का सबसे अहम मैकेनिकल टिश्यू कौन बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा. ठीक. Another important point, cell wall is highly thickened. Cell wall is highly thickened. स्क्लेरेंकाइमा का जो सेल वॉल होता है बच्चे, बहुत थिक होता है, ड्यू टू deposition of very important point here, lignin. This is a complex carbohydrate. अगर याद होगा आपको, जब मैंने कोलेनकाइमा के बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया था कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है, that is thick due to deposition of pectin. But here in sclerenchyma, the cell wall is thick due to deposition of lignin. What is lignin? Complex carbohydrate. Complex carbohydrate. Good. Cells are dead at maturity. जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं, ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनका प्रोटोप्लास्ट खत्म हो जाता है. They lose their protoplasm. That means the cells become dead at maturity. Good. Another important point, शेप के बारे में अगर बात करेंगे, शेप के बारे में, इनकी शेप बच्चे दो तरीके की हो सकती है. Mainly they are elongated. Mostly, हमेशा याद रखना है बच्चे, स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल्स होती हैं, they are mostly elongated. Sometimes they are small, narrow. Okay, so accordingly we can say sclerenchyma is of two types on the basis of form, on the basis of structure. Okay, how many types? Two types, elongated and sometimes they are small or narrow. Elongated sclerenchyma, they are called as fibers. What are they known as? Fibers. While as small and narrow cells, they are known as sclerides. They are small, they are narrow, but they have their own shapes. Sometimes they are oval, spherical, elongated, hair-like, bone-like. That means their shape can be variable. Okay, but sclerenchyma cells, mostly they are elongated, and these elongated sclerenchyma cells, क्या नाम रखा उनका? Fibers. Very good. अब जरा यहां देखिए, ये मैं यहां फाइबर बना रहा हूं. Fibers are elongated, वो भी बात की हमने. Their cell wall is very thick due to deposition of, very good, किसकी deposition होती है? Lignin की deposition होती है.
और इनका ल्यूमिन क्या होता है? ल्यूमिन इज obliterated. Obliterated means lumen is destroyed. क्योंकि इनका वॉल इतना थिक हो जाता है, लेकिन इनकी डिपोजिशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनका जो सेल की अंदर वाली स्पेस जहां पे साइटोप्लाज्म होता वो खत्म हो जाती है या तो बहुत ही कम रहती है. सो ल्यूमिन इज obliterated. So can we say fibers are elongated with pointed ends? With pointed ends. Cell walls are highly lignified. Cell walls are highly lignified. Okay. Third point, very important, lumen is obliterated. Lumen is obliterated. इनका जो अंदर वाली स्पेस होती है सेल की वो तो बहुत कम रह जाती है. नेक्स्ट पॉइंट, longest cells in plants. हमेशा याद रखना है बच्चे, फाइबर्स जो होते हैं, सिक्लेरन गैमेटस फाइबर्स जो होते हैं, वो सबसे लंबी सेल्स होती है. किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर. Another important point in fibers. Fibers occur in groups. Fibers occur in groups. You get my point? Very good. ये सिक्लेरन गैमेटस फाइबर्स कभी अलग नहीं रहते. They are not present individually. They are always present in groups. Okay? Are they dead or living? Very good. Dead at maturity. Dead at maturity. जो फाइबर्स होते हैं ये मर जाती है, डेड सेल्स होती हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं. एक्सेप्शन है बच्चों, यहां पे मैं आपको एक एक्सेप्शन बताऊंगा. There is a plant that is called as tamarix. Tamarix is an exception. It is a plant where the fibers are living. Fibers are living. Otherwise, rule क्या है? रूल ये है कि फाइबर डेड हो जाता है when it becomes mature. Very good. Then we have sclerites. Sclerites are small, narrow cells. Okay, but shape can be variable here. Some cells they are spherical. Some cells they become rod shaped. So they can be spherical. They can be rod shaped. Or they can be star shaped. Isn't it? Star shaped. So sclerites जो होते हैं शेप के हिसाब से इनके डिफरेंट टाइप्स हैं. अगर ये स्फेरिकल थे, this type of sclerite is known as brachyscleride. Brachyscleride, or we call them stone cells, or we call them as grit cells. Brachysclerides, okay, stone cells or grit cells, they are spherical. And always remember, brachysclerides occur in seed coats of, not seed coats, I mean to say, they occur in fruit walls. They occur in fruit walls of
nuts. Fruit walls of nuts. We have here almond, we have walnut, isn't it? उनका जो fruit wall होता है, उनके fruit wall में कौन सी सिक्लराइड्स होती है? ब्रैकिसिक्लराइड्स होती है. Okay. There is another thing that is pulp of fruits such as guava, such as pear, such as sapota. These are some fruits where the pulp contains brachyclerids. The pulp of these fruits has a gritty nature. That gritty nature is due to presence of brachyclerids. Okay? Brachyclerids are also known as cetone cells. They are also known as grit cells. So, if question is asked to you that the gritty nature of the pulp of some fruits like pear, guava and sapota is due to presence of brachyclerids. Then we have rod-shaped cyclerids. These rod-shaped cyclerids are also known as macrocyclerides. Very good. Macrocyclerides. These macrocyclerides occur in seed coats of legumes. जैसे मैं आपको बताऊं पी है, पी सीड जो है उसका जो सीड कोट होता है, उसके सीड कोट में कौन सी सिक्लेराइड्स मिलेंगी? मैक्रोसिक्लेराइड्स. मैक्रोसिक्लेराइड्स का एक और नाम क्या है? रॉड सेल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? रॉड सेल्स. Get my point? Then we have sitar-shaped sclerides. These sitar-shaped sclerides are known as astrosclerides. क्या बोलते हैं इनको? Astrosclerides. And you know, astrosclerides occur in tea leaves. चाय की पत्तियां जो होती हैं, उन चाय की पत्तियों में कौन सी सिक्लेराइड्स होती है? Astrosclerides. What are astrosclerides? What is their shape? Sitar shaped. Where are they present? They are present in tea leaves. Again, I will recapitulate this thing for you. We discussed about sclerenchyma. Sclerenchyma मैंने आपको बताया बच्चे, the term was given by Metanius. What are the features? It is a dead mechanical tissue and male mechanical tissue of the plant. Which a question is asked to you that which is the fundamental mechanical tissue system of the plant? What is that? Sclerenchyma. Cell wall is highly thickened. Why it is thickened? Due to deposition of lignin. What is lignin? It is a complex carbohydrate. Cells are dead at maturity. Very good. Sclerenchyma is how many types of sclerenchyma are there? Two types. Fibers and sclerides. Fibers are elongated with pointed ends. Cell walls are highly lignified. Lumen is obliterated. Longest cells in plants. What are those? Fibers. Fibers occur in groups always. They are dead at maturity. Very good. Where there is an exception where the fiber may be living, and that is tamarix. It is an angiosperm. Then we have sclerides, which are less elongated. They are small, narrow, isn't it? Their shape is variable. They may be spherical, and they are called brachyclerids or stone cells or grit cells. These brachyclerids occur in fruit walls of nuts. Got it?
They occur in pulp of fruits such as guava, pear and sapota. Then we have macroscleroids, which are also known as rod cells. They occur in the seed coats of leguminous plants. Then we have astroscleroids, which are, what is the shape? Star shaped. कहाँ पे होते हैं? Tea leaves में पाए जाते हैं. You get my point? So my dear students, that completes our portion pertaining to simple permanent tissues. Our next topic will be complex permanent tissues. And how can we define complex permanent tissues? Very good. Yes, complex permanent tissues are those tissues which are characterized by the presence of more than one type of cell. So I am writing down here complex permanent tissues. Complex permanent tissues. How can we define them? Very good. Tissues made of more than one type of cell. So these tissues are made of more than one type of cell. How many types of complex permanent tissue? Always remember, complex permanent tissues, PT, are heterogeneous. Hetero means different. That means heterogeneous means they have different elements in them. Third point, complex PT, complex permanent tissues, are also known as vascular tissues. Or conducting tissues. Conducting tissues. Example? Can you give me an example of complex permanent tissues? Yes. There is xylem, number one, and number two, there is phloem. These are two different types of complex permanent tissues. We have to study them one by one. Let us take up the first. That is called as xylem. Who coined the term? Term was coined by, I am writing down here, Nageli. Who coined the term xylem? Nageli. Good. Point number second. How can we define xylem? Main, water and mineral conducting tissue of plant. Dear students, how can we define xylem? Xylem is the main conducting tissue through which plant transports water and minerals. What is water and minerals collectively known as? Very good. Sap. There is another function of xylem inside the plant. What is that? Xylem provides mechanical support to the plant. Okay, so I am writing it down. Provides
mechanical support, provides mechanical support to the plant.